Next, question number 7 is, prove that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, prove that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. Then the quadrilateral is a parallelogram. So the solution for this numerical is, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होना चाहिए. इसका मतलब है इट इज गिवन दैट ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD bisect each other. It means OA is equals to OC and OB is equals to OD. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स जो है ना, AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है. They are bisecting each other. इसका मतलब है if they are intersecting at O, then OA is equals to OC, OB is equals to OD. OA is equals to OC and OB is equals to OD दिया है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है. So I am supposed to prove that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है करके प्रूव करना है. Now the proof is, now let us consider AOB and COD in triangles AOB and COD. AOB and COD, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप देखो. AO is equals to CO, AO is equals to CO given, AO is equals to CO, that is given. ये तो क्वेश्चन में दिया है. AO is equals to CO. Say this is angle 1, say this is angle 2. ये एंगल 1 है मान लो, ये एंगल 2 है मान लो. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. OB is equals to OD, that is also given.
OB is equals to OD, that is also given. This is OB is equals to. So AO is equals to CO, given 1 equals to 2, vertically opposite, OB is equals to OD given. So by SAS, these two triangles are congruent. Therefore, the triangle AOB is congruent to triangle COD by angle, SAS, side, angle, side, side, angle, side, congruent criterion. ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये वो बी सी ओ डी, बड़े ध्यान से देखो, ये ओ बी सी ओ डी अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये अगर मान लो एंगल 1 है, एंगल 1, ये अगर मान लो एंगल 2 है, क्योंकि ए ओ बी सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव किया आपने, प्रूव किया है. ए ओ बी सी ओ डी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव कर दिया आपने बाय दिस क्राइटेरियन. इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, इजंट इट? एंगल 1 नहीं, लेट इट बी एंगल 3. सॉरी, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 और 2 यूज किया है ना, लेट इट बी, दिस इज 3, इसको 3 करके एज्यूम करो. Let it be 4. Let this angle is 4. क्योंकि 1 और 2 वहाँ यूज कर लिया मैंने. So since you have proved that AOB is congruent to COD, AOB COD दोनों congruent है by SAS congruent criterion, इसका मतलब 3 and 4 are equal by CPCT. So therefore angle 3 is equals to angle 4. This is by corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles. But angle 3 comma angle 4 are alternate interior angles. वो दोनों alternate interior angles है. कैसे है फिगर? अगर आप देखोगे तो ऐसा है फिगर, ए बी सी डी, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4. इन दोनों को मिटा दो, आपको समझ में आएगा. तो 3 और 4 कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट. 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो दोनों इक्वल है. इसका मतलब क्या है? इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर parallel. Therefore AB is parallel to CD. आपने प्रूव कर दिया है AB is parallel to CD. इसी तरह अभी आपने ये दोनों ट्रायंगल्स लिया है ना, ये दोनों, अभी ये दोनों ट्रायंगल्स लो. जस्ट नाउ यू हैव पुट दीज टू ट्रायंगल्स, नो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स लो, तब ये दोनों पैरेलल है करके प्रूव हो जाएगा. कैसे होगा मैं यहां बता रहा हूं. Now in triangles AOD, in triangles AOD and in triangles AOD and COB, in these two triangles, in triangles AOD COB, AO is equals to CO given, AO is equals to CO is given, AO is equals to CO is given. Am I right? अगर मान लो ये एंगल 5 है, say this is angle 5, this is angle 6. Angle 5 is equals to angle 6, vertically opposite angles. Angles 5 is equals to angle 6, vertically
opposite angles. Isn't it? In triangles AOD COB, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल्स में AO is equals to CO is given. Angle 5 is equals to angle 6, vertically opposite angles, and OD is equals to OB. OD is equals to OB, that is also given. OD is equals to OB, that is also given. इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD is congruent to COB. Triangle COB. AOD is congruent to COB by कौन सा क्राइटेरियन? SAS by SAS congruent criterion. Isn't it? SAS, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, अभी हमने प्रूव किया ना, AOD एंड COB. अगर मान लो, जस्ट इमेजिन, ये वाला एंगल 7 है, एंगल नंबर 7, और ये वाला एंगल 8 है मान लो. जस्ट इमेजिन दिस इज एंगल 8, ये एंगल 7 है, वो एंगल 8 है. तो क्या होगा? क्योंकि अभी अपने प्रूव किया AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB, AOD COB कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूव किया है. सो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8. एम आई राइट? दिस इज बाय corresponding parts of congruent triangles, CPCT. लेकिन ये एंगल 7 और एंगल 8 कौन सा एंगल से है? कैसे अल्टरनेट है मैं बताऊंगा आपको यहां पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करके. ये सब फिगर्स आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस. ABCD, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8. एक काम करो, अभी जस्ट रिमूव इस ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, इन दोनों को निकाल दो. तो ये कैसा है बताओ? ये दोनों दो लाइन से, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये दोनों दो स्ट्रेट लाइन से, ये ट्रांसवर्सल जैसा है ना. तो एंगल 7 और एंगल 8 कौन से एंगल्स हुए हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए हैं. सो बट एंगल 7 कॉमा एंगल 8 आर alternate इंटीरियर एंगल्स. वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ है. तो वो दोनों इक्वल भी है, मतलब 7 और 8 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है, वो दोनों अल्टरनेट. अगर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है तो ये दोनों लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा. सो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC. तो अभी तक आपने क्या प्रूव कर दिया है? AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये दोनों है पैरेलल है करके प्रूव कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस. AB इज पैरेलल टू CD मतलब ये दोनों पैरेलल है, और AD इज पैरेलल टू BC मतलब ये दोनों है. सिंस ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम. वहां प्लेस नहीं है तो हियर आई एम राइटिंग लास्ट स्टेप. सिंस each pair of opposite sides, since each pair of opposite sides is parallel, therefore the quadrilateral ABCD is a parallelogram. इसका मतलब है अगर वो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा.